So let's start today from photoelectric effect. तो photoelectric effect कौन देना ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆସେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲେ ଫୋଟନ୍ ହେଇକି ଆସେ ବଟ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଫର୍ମ ଆସେ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ଫୋଟନ୍ ବୋଲି କହୁ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୋଟନ୍ ଆସିଲା ନା ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଫର୍ମ ଆସିଲା ସେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ସହିତ ଆଟାକ୍ ହେବ ତ ଇଜେକ୍ସନ୍ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଇଜେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବାହାରେ ତାକୁ ଫୋଟୋ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ୟେସ୍ जदि आमर एनर्जी ऑफ फोटन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम किंतु जदि एनर्जी ऑफ फोटन वर्क फंक्शन ठारू कम हो गला ताले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेनी जदि एनर्जी ऑफ फोटन इक्वल है आमर वर्क फंक्शन देन भी आमर माने ये हम दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम. So now the topic is that कि what do you mean by threshold frequency and what do you mean by threshold wavelength. So what is threshold frequency and what is threshold wavelength? Kindly listen to आमे जो frequency is inversely proportional to wavelength. So threshold frequency is that frequency, that minimum frequency which is required to eject an electron, and threshold wavelength is that maximum wavelength from and threshold is the maximum limit that for that limit maximally the wavelength the photoelectric effect can come उससे बाहर नहीं हो सकता ता बाहर का ही दैट इज द मैक्सिमम लेवल. सो अपर लिमिट यही उससे तो तार तलू भी सब रही लाइक ता ऊपर को केवे भी रही पारे. ओके नेक्स्ट ओके थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड लेवल डन. नेक्स्ट दिस जो होल कंसेप्ट दिस इज द मतलब क्या हो तो को कंसेप्ट बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो वी कैन राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस एफ 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी. लाइक आम पाखे गोटे आटम अच्छे तो आटम भितर कौन न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है से इलेक्ट्रॉन को अट्राक्ट कर रखि तो से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने आमको जी एनर्जी देवाक पड़ो से एनर्जी सब कौन दरकार ना वर्क फंक्शन इज दैट एनर्जी जोटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भितर है अब आम जो एनर्जी प्रोवाइड कले टोटल एनर्जी तो आम जो एनर्जी प्रोवाइड कले से एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को बाहर को भी आणुची और जो किसी दूर नहीं जाए तो आम काइनेटिक एनर्जी कहवा. सो वी कैन सिंपली टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी. Okay, so here E is equal to total energy, 5 is equal to work function, and kinetic energy is equal to kinetic energy remaining energy, you can simply say. Okay, next topic. Let us discuss about that. So kinetic energy of the ejected electron is independent of intensity. Like केते इंटेंसिटी रे काइनेटिक एनर्जी हो सेटा इंटेंसिटी इज व्हाट माने केते के हम पाखे अच्छी फोटन है केते के हम प्रोवाइड कर 1 फोटन आस 1 इंटेंसिटी हम 100 फोटन आस 100 इंटेंसिटी हम 50 फोटन आस 50 इंटेंसिटी हम तो इंटेंसिटी तापर डिपेंड कर हम पाखे केते की फोटन अछि तो केते काइनेटिक एनर्जी बाहर दैट इज डज नॉट डिपेंड अपन इंटेंसिटी. लाइक आमे तो गोटे जदी बाहर करा ना तो से हम पे केते नंबर ऑफ फोटन आस तापर डिपेंड करिवो. सो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी. समझ में अच्छा तो वैसे काइनेटिक एनर्जी कहाँ फ्रिक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी. तो दीटा पॉइंट ये क्लियर करते हैं काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज दैट द नंबर. सो वी कैन सिंपली से द नंबर इज डिपेंडेंट इंटेंसिटी and the number of electron ejected is independent of frequency. But we can say photo current is directly proportional to intensity or photo current is dependent on intensity. तो फटाफट रिकैप लेते कि we have two things. Okay, one is kinetic energy, one is number of photons. So and maximum we have 4 things. One is your frequency, one is your intensity, one is your number of electron जो बाहर है total energy, and another kinetic energy. So next we can see that kinetic energy is directly proportional to frequency but it is independent of intensity. So what do you mean by intensity? The intensity is that the number. Okay, so intensity is the number, that number how much of photon we have. Okay, how much photon we have, this is the intensity. Okay, so we can simply write the kinetic energy is independent of intensity and is direct and it is dependent on frequency. Frequency is that amount of
which required to eject an electron. So केते frequency लगे so that केते speed रो सेटा जीवो तापरे depend करे किंतु intensity पर केबे kinetic energy depend करेनी सेटा बिकॉज़ number of photon eject केति को सेटा हम intensity depend करे ना कि frequency पर. Okay, तो then मैं graph बनेबा graph I can write. So this could be the graph I can write. Yes, graph I have to write. Okay, so graph you can see. We were making a graph on kinetic energy and intensity. So this is the graph is straight line. The graph is completely straight line because kinetic energy is independent of intensity. But here we are right. If we write frequency. If we write frequency, then the graph is not straight line. The graph is like this. The graph is like yeah. Achha. Next, this part is the F0. This is the threshold frequency because we know if threshold frequency is the minimum frequency which is required to eject an electron and move it. So till the time when threshold frequency is not present, the kinetic energy approximately 0. So when frequency is 0, the kinetic energy almost 0. So the threshold frequency is also needed. Okay, next. Next, if we are ready to draw the diagram in number of photon and intensity, then this is the straight line. And if we are making a graph of a number of photon and frequency, then this is straight line. Then this is excellent. This is straight line. Then yes. So this is the point. Done. So I think you got it. Thank you so much. चलो लिख देते हैं. Thank you so much. Thank you.